Minerals and ores. A mineral is a naturally occurring inorganic substance found deep under the surface of the earth. What is minerals? What do you mean by mineral? A mineral is a naturally occurring inorganic substances found in deep under the surface of the earth. Whereas an ore is a mineral from which one or more metals can be extracted profitably. For example, aluminium is extracted from its bauxite ore, and iron from its hematite ore. So, an ore is a mineral from which one or more metals can be extracted profitably. Aluminium is extracted from bauxite ore, iron from its hematite ore. The sequence of process used to extract a metal in its pure form from its ore, that is called metallurgy. So metallurgy is the process which is used to extract a metal in its pure form from its ore. हम किसी ore से, जैसे बॉक्साइड है, इस बॉक्साइड से प्रोसेस करके अगर हम एल्युमिनियम निकालते हैं, एल्युमिनियम बनाते हैं, तो यही प्रोसेस मेटलर्जी है। हेमेटाइट ओर से एक्सट्रैक्ट करके आयरन निकालते हैं, तो जो एक प्रोसेस करते हैं वो प्रोसेस और द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस इज़ नोन एज metallurgy. So the extraction of a metal from its ore generally involves the following steps. So in metallurgy, how many steps are required? First step is concentration of ore. This is first step. Second, reduction. Third, refining of metal. So in metallurgy, the first process is concentration of ore. It is the process of removal impurities from the ore. In this process, we remove impurities from the ore. Reduction is the process of treating the metal ore to get the metal in its free state. मेटल ओर को मेटल में परिवर्तित करना, फ्री स्टेट में परिवर्तित करना रिडक्शन है। तो सबसे पहले मेटलर्जी में हम उसका कंसंट्रेशन करते हैं, और ये कंसंट्रेशन उसकी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए है। जब उसका कंसंट्रेशन हो गया, उसके बाद हम उसका रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन, जो भी कंसंट्रेटेड ओर है उसको रिड्यूस्ड करके उस ओर को प्रोसेस करके फ्री स्टेट मेटल में परिवर्तित करते हैं।
जब वो मेटल फ्री स्टेट में परिवर्तित हो गया, उसके बाद हम उसका रिफाइनिंग करते हैं। द मेटल ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन इज़ जनरली इम्प्योर। रिडक्शन होने के बाद जो मेटल मिलता है, ये मेटल इम्प्योर होता है। फ्री स्टेट में तो होता है लेकिन इम्प्योर होता है। इस इम्प्योर मेटल को हम लोग रिफाइनिंग प्रोसेस से प्योर मेटल बनाते हैं, प्योर मेटल। सो obtained reduced metal by refining, we can get pure metals. So generally this is the gist process of metallurgy. We have to study in every step. The concentration of ore is only to remove impurities, but there are so many processes of concentration depending upon the ore and metal. Reduction is generally to change metallic ore to metal in free state. Here also there are so many processes depending upon ores and metal. And after getting impure ore, it can be pured by refining of metal. So I think it is clear what is metallurgy and what are the processes of metallurgy. Metallurgy is the process for finding metals from metallic ores. For example, bauxite is a metallic ore, and from bauxite we are getting aluminium by metallurgy process. Hematite ore can be converted to iron. From hematite ore we extract iron by the process of metallurgy. And in metallurgy, these are the process by which we have to go through. I think it is clear. Now we will study physical properties. Physical properties. So let us now study and compare the physical and chemical properties also of metals and non-metals. But first of all, physical properties. First point is physical state. Physical state. All metals except mercury, because it is a liquid form. Mercury is a liquid form, but it is metal. So all metals except mercury are solid at room temperature. This is the physical state of metal. We are describing about physical properties of metal. The first point is physical state. What is the physical state of metal? Metals are obtained in what type of state? That is in physical state. So except mercury, mercury is obtained in liquid state. And mercury is also metal, but it is found in liquid state. But generally all metals are solid at room temperature. At room temperature, the condition is of solid state. For example, iron is a solid state, it is a metal. Aluminium is a metal, it is also in solid state. Gold, silver, etc. These are metals and these are found in solid state. But if you compare about non-metals, the non-metals at room temperature may exist in solid, liquid and gaseous also. Non-metals are obtained in solid state, liquid state and gaseous state.
In all states it can be formed. For example, carbon is a non-metal. It is obtained in solid state. Sulfur, it is also in solid state. Iodine is in gaseous state. Iodine is in gaseous state. So it is existing in other liquids also. In liquid state, we can obtain oxygen is also in gaseous state. So I can say that non-metals are obtained in solid state, liquid state, and gaseous state. This is the physical state of non-metal. But metals, except mercury, are found at room temperature in solid state only. I think physical property is clear. Now come to melting point and boiling point. Melting point, second point is melting point. Melting point and boiling point. Metals generally have high melting point as well as high boiling point. Metals का melting point और boiling point दोनों हाई होता है जनरली. जैसे आयरन का मेल्टिंग पॉइंट, अगर हम आयरन के मेल्टिंग पॉइंट को कंसीडर करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 1536 डिग्री सी होता है. मतलब आयरन लिक्विड फॉर्म में चेंज होगा अगर उसका टेम्परेचर 1536 डिग्री सी हो जाए. ठीक है. और इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर हम लिया जाए कि मन ये लिक्विड से बॉयल करने लगेगा अगर इसका टेम्परेचर 3000 डिग्री सी होगा. तो मेटल्स का जनरली मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होता है. आई थिंक इट इज क्लियर. बट नॉन मेटल्स जनरली हैव लो मेल्टिंग पॉइंट. लेकिन नॉन मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है जनरली लो होता है. लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फ़र अगर हम ले लें, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फ़र तो मात्र 119 डिग्री सी होता है. 119 डिग्री सी पर ये सल्फ़र क्या होता है, मेल्ट कर जाता है. डायमंड और कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट जनरली एक्सेप्शन होता है क्योंकि डायमंड का, कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट जनरली हाई होता है. तो दिस इज द एक्सेप्शन केस. जनरली दिस इज एक्सेप्शन बट जनरली मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट are low in non-metals. Melting point and boiling point are low. So this is second property, physical property. Third physical property is related to its density. Density. Metals generally have high densities. Metals का density generally high होता है और नॉन मेटल्स का डेंसिटी लो होता है. देयर आर सम एक्सेप्शंस. जनरली हम बात कर रहे हैं लेकिन एक्सेप्शन केस भी हो सकता है. कुछ मेटल्स का डेंसिटी लो होता है और कुछ नॉन मेटल्स का डेंसिटी हाई होता है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज हार्डनेस. Most metals are very hard. Metals mostly are very hard. They can withstand
quite high pressures without putting destroyed. Non-metals are generally not hard, they are brittle and easily break into pieces when hammered. नॉन मेटल्स को हम लोग ईज़िली हैमर्ड करके ब्रेक कर सकते हैं, ब्रिटल कर सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स को हम इजी वे में ब्रेक या ब्रिटल नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए हमको क्वाइट मोर प्रेशर इज रिक्वायर्ड. तो दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज़. वन मोर प्रॉपर्टी यू कैन इंक्लूड, दैट इज luster. मेटल्स हैव ए शाइनिंग सरफेस. मेटल्स का जो सरफेस होता है वो शाइनिंग होता है, शाइनिंग सरफेसेस. दिस इज नोन एज metallic luster. Non-metals are generally have a dull appearances. Non-metals का generally dull appearances होता है. जैसे आयोडीन है but iodine is only the non-metal which has natural luster. लेकिन मेटल्स का सरफेसेस जनरली शाइनिंग होता है. आई थिंक इट इज क्लियर. एंड लास्ट बट नॉट, देयर आर सो मेनी प्रॉपर्टीज ऑल्सो, फिजिकल प्रॉपर्टीज. अप टू लस्टर वी हैव डिस्कस्ड. थैंक यू.